We'll now study inscribed angle theorem. What does the statement say? We'll see. The measure of an inscribed angle. See this angle angle BAC. Angle BAC is inscribed. Inscribed का मतलब है ना, हम लोग पत्थर में इंस्क्रिप्शन करते हैं, देखो इंस्क्राइब कार्विंग करते तो अंदर होता है. ओके, लाइक दैट दिस एंगल BAC is inscribed in arc BAC. Okay, and this angle intercepts, गले लगाता है. हाथों में ऐसे उसने पकड़ा, दो हाथ है उसके अंदर जो आ रहा है. BDC is the arc intercepted by angle BAC. okay? दोनों चीजें ध्यान से समझो. BAC, angle BAC is inscribed in a arc BAC only, and it intercepts, hold करता है. Holds which arc? Angle BAC holds which arc? BDC. So ये जो theorem है, inscribed angle theorem, shows that inscribed angle, ये जो inscribed angle है BAC, is half the measure of intercepted arc. BAC is half of major arc BDC. So our construction is draw segment AO, CO, and draw segment ray AO such that it intersects the circle in point E and join CO. Now we'll start with the proof. See, there are three cases. Case 1, case 2, and case 3 that arises in the proof. Please understand, this is very, very important. There are three cases that arises in the proof, in the theorem of a proof, or a proof of a theorem. First case is, see, when you take an inscribed angle, there are three possibilities. One, the center may lie on the angle which is inscribed, on the inscribed angle. Point number 2, or case number 2. Point O, that is the center, may lie in the interior of the angle. And third, point O, that is the center, lies in the exterior of the inscribed angle. Number 3 संभावना है, 3 cases. पहला संभावना, first possibility, और case number 1 is कि जो center of the circle है, lies on the inscribed angle, one of the arms of the inscribed angle. Possibility 2, center of circle lies in the interior of the angle. And third, center lies in the exterior of the angle. So first we'll see case 1, if center lies on one arm of the inscribed angle, so हम inscribed angle लेंगे EAC, ये inscribed angle है. So you can see center lies on the inscribed angle, इसलिए हमने ये construction draw किया. Okay, और join CO किया. In triangle AOC, अभी देखो, AO is equal to CO, radii of the same circle. Therefore, angle OAC equal to angle OCA equal to say मतलब supposition, say x, theorem of isosceles triangle. Please ध्यान से देखो इस point को. ये OAC is nothing but angle EAC. OAC is nothing but angle EAC because O lies on arm AE. Okay? चलो इसको याद रखना. Now what is EOC? What is EOC? EOC is the exterior angle of triangle AOC. देखो ये बाहर का angle, exterior angle of angle AOC. So EOC is equal to OAC plus
OCA, the extra angle theorem of an angle, because extra angle is sum of interior angles. Therefore, EOC will be x plus x 2x degrees. तो देखो 2x degrees हमें मिल गया. This shows that ये सेंट्रल एंगल है. कोइंसिडेंट बोलो, कोइंसिडेंट क्या वो है ही, because O is a lies on arm, so that EOC is a central angle. A central angle is equal to measure of the intercepted minor arc. तो देखो measure arc EC will be equal to, देखो ये 2x है, will be equal to EOC equal to 2x, definition of measure of an arc. Now what is EC? EC is the arc which is intercepted by angle OAC, मतलब EAC. So मैंने OAC लिखा है समझाने के लिए, to make you understand. पहले भी मैं बोल चुका हूं ये x है, लेकिन ये OAC is nothing but EAC, याद रखो. So EAC is equal to half of measure arc EC. देखो ये x है और ये 2x है, तो इसका मतलब ये जो OAC है वो आधा है 2x का, right? Hence we got the first case proved. Similarly, we can show, if I draw in this case OB, I can show EAB is half of BDE. ये बता सकता हूं, just like above. अब आते हैं केस नंबर 2 पे. If center lies in interior, देखो ये BAC inscribed angle है, center lies in the interior of the angle. Central O lies in the interior of angle BAC, ऐसा पोजिशन है. So we get, इन दोनों को ऐड करो, add these two angles. Measure angle EAC plus measure angle EAB equal to half measure arc EC plus half measure arc B. Adding statement number 6 and 7. Add these two angles, this C. EAB plus EAC is nothing but BAC. हाफ बाहर निकालो, मेजर आर्क EC प्लस मेजर आर्क BE, ये है एंगल एडिशन प्रॉपर्टी. एंगल BAC as it is equal to half as it is. Add these two arc. EC plus BE is nothing but arc BDC. ये है arc addition property. Now our case number 2 proved. Now last, the third possibility के लिए हमें वापस एक बार फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा. Now see, angle BAC is this, and vertex or center O lies in the exterior of angle BAC. बस अभी इनको सब्ट्रैक्ट करना है. So EAB minus EAC equal to half of measure arc BE plus half of measure arc EC. देखो मतलब BAE minus EAC will give you this angle. So then is equal to half of ये पूरा BE minus ये छोटा C मिलेगा BDC. So we get, इनको subtract करो, we get BAC equal to half, कॉमन निकालो, measure arc BE minus measure arc EC. क्या मिलेगा आपको? Angle BAC equal to half measure arc BDC. This is very important theorem है. कॉन्सेप्ट वाइज तो सभी मोस्टली इसके ऊपर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं. थियरम के रूप में भी इसको पूछा जा सकता है और एक्टिविटी के रूप में. सो वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करो. नाउ वी प्रोसीड फर्दर. अब आगे के दूसरे प्रूफ देखते हैं. Before we go to the proof,
हम बाकी के प्रूफ करने के मैं कुछ आपको फिगर ड्रॉ करता हूं. आई विल ड्रॉ सम फिगर्स एंड एक्सप्लेन यू व्हाट इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल, इंस्क्राइब्ड आर्क एंड इंटरसेप्टेड आर्क, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए. देखो मैं दिस इज सर्कल, एक सर्कल है. इसमें कौन सा इंस्क्राइब्ड एंगल है? देखो, एंगल BAC is an inscribed angle, but angle BAC in the second figure, ये फिगर 1 है, फिगर A, फिगर B. In figure B, BAC is not an inscribed angle. उसकी वजह यह है, देखो, द वर्टेक्स ऑफ एंगल BAC इन केस नंबर 2 डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, और इसलिए दिस एंगल BAC इज नॉट एन इंस्क्राइब्ड एंगल, बट इन दिस केस दिस इज एन इंस्क्राइब्ड एंगल. एंगल angle BAC is inscribed because vertex A lies on the circle. Here angle BAC is not inscribed because vertex A is not on the clear concept. Okay, because, now ध्यान से ये concept है, because of this we can say arc BAC is an inscribed arc, because this arc is inscribing angle ABC. Angle BDC, arc BDC is intercepted arc. Angle BAC is inscribed in arc BAC and BDC is an intercepted arc. Clear? Yes. यहाँ देखो, angle BAC is not an inscribed angle. Hence, ये जो arc है BC, इसको मैं समझो X लेता हूं यहाँ में. Arc BXC, we cannot say in this arc the angle is inscribed. No, angle is not inscribed. But this angle BAC, even in this case, intercepts an arc, and that is arc BDC. Here also arc BDC is intercepted by angle BA. ध्यान दो, इंस्क्राइब्ड एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है. इंटरसेप्टेड आर्क BDC यहां भी है और इंटरसेप्टेड आर्क BDC यहां भी. इंटरसेप्टेड आर्क का मतलब जो आर्क अंदर, वो एंगल के अंदर है. एंगल के बाहर है वो होगा एंगल, अगर इंस्क्राइब्ड होगा तो यहां है
यहां नहीं है। क्लियर? कभी कभी ऐसे भी होता है। ये तो हमने समझ लिया। अभी यहां देखो, इन दिस एंगल BAC इज नॉट इंस्क्राइब्ड क्योंकि वर्टेक्स सर्कल के बाहर है। वर्टेक्स इज आउटसाइड द सर्कल। ये वर्टेक्स इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये वर्टेक्स आउटसाइड इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। सो इन दिस केस ऑल्सो एंगल इज नॉट इंस्क्राइब्ड, बट देर आर टू इंटरसेप्टेड आर्क। याद रखो इसमें, आर्क BXC and arc DYE both intersected by angle BAC। मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा है, याद रखो इंटरसेक्टेड में ये आर्म है तो उसके अंदर अगर आर्क आ रहा है तो इंटरसेप्टेड आर्क है। So this also is an intercepted arc and this also is an intercepted arc। दोनों intercepted arc है। इनका रिलेशन क्या है वो हम लोग बाद में I will prove you before, probably before going to 3.4। उसके पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा, जब भी शायद 3.4 के पहले ही। और कुछ कोरोलरीज हैं इंस्क्राइब एंगल के, वो करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी गो फॉर 3.4। यहां देखो, यहां इंटरेस्टिंग है, ये तो एंगल से ये एंगल है लेकिन ये स्पेसिफिक एंगल है। ये एंगल जो दो आर्म्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं उसको। सी दिस लाइन AB कैन बी कॉल्ड एज अ टेंजेंट, और ये लाइन जो है वी कैन कॉल द सीकेंट। कि उसको प्रोड्यूस करोगे तो इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इट इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन वन ओनली वन पॉइंट। सो वी कैन सी दिस टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, थ्योरम ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोल सकते हो। यहां ये वापस देखो, पॉइंट A लाइज ऑन द सर्कल, तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। Here angle BAC is inscribed in arc AC। इसको Y पकड़ो, so AYC, and arc AXC is इंटरसेप्टेड आर्क। ये सेंटर ही समझो, यहां ये सेंटर है।
अब यहां आते हैं, यहां ध्यान दो, दिस ऑल्सो लाइज इन लाइक इन दिस केस, ये भी एंगल जो है, द वर्टेक्स ऑफ एंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहां दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हमें दो आर्क को लेना पड़ेगा, यहां भी दोनों आर्क को लेना पड़ेगा, यहां ही दोनों आर्क को लेना पड़ेगा। इसका जो रिलेशन है वो भी मैं आपको प्रूव करना पड़ेगा। दे मी आस्क यू, द प्रूफ फॉर 4 मार्क्स आ चुका है एग्जाम में पहले, तो इसको भी हम बाद में प्रूव करेंगे आफ्टर ऑल दिस कोरोलरी प्रूव। लेकिन इसको मैं लिख देता हूं, यहां ये इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है, दिस एंगल इज नॉट इंस्क्राइब्ड, लेकिन इंटरसेप्टेड आर्क है, आर्क BXC एंड आर्क DYE are intercepted. We can use angle BAC. हम बोल सकते हैं BAC एंगल। ओके, चलो let us go to corollaries of different ये inscribed एंगल ट्राइंगल के corollaries को करते हैं। Let's see the first corollary क्या है। Angle inscribed in the same circle are congruent. Value property. Angles inscribed in the same arc are congruent. We have to prove this. See, they are given us angle inscribed. क्या प्रॉपर्टी है? Angles inscribed in the same arc are congruent. इसका मतलब ये सर्कल है,
सेंटर हमेशा आप लोग सर्कल ये लेसन के क्वेश्चंस में जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे सेंटर लिखना या पॉइंट करना भूलो मत, सीधा 1 मार्क कटेगा। अगर नहीं मतलब क्या घाई घाई में बच्चे क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं लेकिन सेंटर मार्क करना भूल जाते हैं। आप सेंटर नहीं मार्क करते तो एज पर डेफिनेशन दिस डजंट बिकम अ सर्कल, सो और मार्क्स 100% काट देंगे, बिकॉज डेफिनेशन ऑफ सर्कल इज लोकाई ऑफ पॉइंट्स आर सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो बहुत जरूरी है ये सेंटर मार्क करना। A circle with center O, angle BAD and angle BCD, we can see they are lying in arc BYD. It is inscribed in arc BYD. हमें प्रूव करना है these two angles, since they are inscribed in the same arc, they are congruent. Because if they are inscribed in the same arc, both of them are intersecting same minor arc BXD, और BXD का आधा जो भी मेजरमेंट होगा BXD का डिग्रीज में, उसका आधा दोनों का एंगल हो जाएगा। मीन्स बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव करेंगे यूजिंग इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी। प्रूफ पहला, angle BAD equal to half major arc angle BCD equal to half major arc BXD। इसका कंबाइंड रीजन है inscribed angle. Statement number 3. Since right hand sides are equal, therefore angle BAD equal to angle BCD from statement 1 and statement 2. Therefore angle BAD congruent angle BCD, hence proved. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज 90। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज 90। चलो भाई सर्कल ड्रॉ कर लो। ये सेंटर है, ये होगा सेमी सर्कल, और हमें ये B A C, ये सेंटर O और ये X। We have to prove that BAC is 90. Given a circle with center O, angle BAC is inscribed in semicircle BAC. To prove angle BAC 90 degrees. Start with proof. 2-3 लाइन्स के प्रूफ है, कोरोलरीज होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, मेजर आर्क BXC इक्वल टू मेजर आर्क BAC equal to 180 degrees. Measure of semi circle. Statement number 2. ये सेमी सर्कल गया हुआ है BAC,
angle BAC equal to half into major arc BAC. Inscribed theorem. Therefore, angle BAC half into 180 degrees from statement 1 and statement 2. Therefore, angle BAC 90 property next proved. Property number 3. Before we go to the third property, let me explain to you definition of a cyclic quadrilateral. देखो, if all the 4 vertices of a quadrilateral lie on the circle, then the circle is called a cyclic quadrilateral. Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. ये अपना next theorem. Next property is theorem में लिखते हैं. Opposite angles of सप्लीमेंट्री या 180 में दिया है सप्लीमेंट्री. क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पड़ेगा आपको. छोटा लेते हैं. Angle PQR and angle PSR. Angle QPS and angle I'll erase this.
Statement number 1, हमें प्रूव करना है दिस एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. पहले बहुत आसान है. एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ. एक स्टेटमेंट लिख. अच्छा, पहले याद रखो मैंने यहां क्या लिखा है. पी क्यू आर एस इज साइक्लिक. इसका मतलब point P, point Q, point R, point S all lie on the same circle. Okay, or we can say these vertices P, Q, R, S are concyclic. चलो. So angle PQR is equal to half. PQR is half major arc PSR. Statement number 2, angle PSR equal to half major arc PQR. PQR intercepts PSR and PSR intercepts PQR. Reason आप जानते हो. Inscribed angle theorem. Now add these two. Therefore angle PQR plus angle PSR equal to half. इसके अंदर मेजर आर्क PSR plus मेजर आर्क PQR. Reason adding statement 1 and statement 2. इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड करो. स्टेटमेंट नंबर 4, बट मेजर आर्क PSR प्लस मेजर आर्क PQR इक्वल टू 360 डिग्रीज. इसका रीजन है मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्रीज. इसका रीजन है measure of a circle. Measure of a circle is 360 degrees. Therefore, statement number 5. Therefore, angle PQR plus angle PSR equal to half into 360 degrees. From statement 3 and statement 4. Therefore, angle PQR plus angle PSR equal to 180 degrees, hence proved. 6. Similarly, we can show angle QPS plus angle QSR equal to 180. Opposite angles of cyclic quadrilateral supplementary. ये अपना थियरम. एक और है. एक्सट्री एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम. ये हमें प्रूव करना है. an extra angle of a cyclic quadrilateral is congruent to an extra angle
an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to the angle opposite to angle opposite to adjacent interior angle. इसका मतलब देखेंगे, पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे तो अच्छी तरह से समझेगा. इसको भूलना नहीं है. सेंटर गिवन an exterior angle of a cyclic quadrilateral is congruent to angle opposite to adjacent interior angle. This is the angle we are talking about. This is exterior angle of a cyclic quadrilateral. Now we have to prove this angle, okay, exterior angle of a cyclic quadrilateral. This angle is congruent to what? To the angle opposite. ये angle है opposite to what? Adjacent interior angle. Interior angle है लेकिन adjacent बाजू वाला. So we have to show these two angles are congruent. ये हमें बताना है. Okay, start करते हैं. बहुत आसान प्रूफ है ये. एंगल QPS प्लस एंगल QRS 180 डिग्री. अभी हमने इसके पहले थ्योरम किया था. अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक quadrilateral is supplementary. Statement number 2. Angle QRT plus angle QRS equal to 180 degrees. Angles in linear. ध्यान दो क्या मैंने लिखा. I said angle QPS plus angle QRS equal to 180 because these two angles form opposite angles of a cyclic quadrilateral, and opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary. तो ये हमने लिख दिया यहाँ. अब angle QRT plus angle QRS 180 because they form linear pair. Statement number 3. See, this is both 180. Therefore, angle QPS plus angle QRS equal to angle QRT plus angle QRS. This is from statement number 1 and statement number 2. So, since in statement number 1 and statement number 2 right hand sides are equal, therefore their left hand side also will be equal. यहाँ देखो QRS कॉमन है, निकाल दो.
Therefore, angle QPS equal to angle QR. QR ये लेते हैं ना, QRT ले तो ये QRT reason subtracting angle QRS from both sides. देखो ये कैंसिल नहीं करना है प्रूफ में, लेकिन बता रहा हूं. कॉमन इसका मेजर सेम है, निकाल दो सब्ट्रैक्ट करके. QRT, therefore angle QRT congruent angle UPS. ये अपना